Bismillahirrahmanirrahim. Today I'll talk about climate change. 20th August 2018 स्वीडन में 9th क्लास में पढ़ रही 15 साल की लड़की ग्रेटा थनबर्ग ने स्कूल छोड़कर स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने बैठकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया. She began her protest with regard to climate change. खास बात यह है कि दोस्तों ग्रेटा ये प्रोटेस्ट करने अकेली बैठी थी. No one supported her initially. और ख़ास बात यह भी है कि स्वीडन में उस महीने जो गर्मी पड़ी थी वो 260 years में hottest summer थी. The effect of climate change was clearly visible upon Sweden. ग्रेटा की डिमांड सिर्फ इतनी थी कि स्वीडिश गवर्नमेंट एक्शन ले अपने कार्बन एमिशंस को कम करने में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग. It is not so that Greta did not approach other people. Reportedly, Greta had approached her friends and the students in her school. उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश की कि आओ मेरे साथ प्रोटेस्ट करो इस चीज़ के रिगार्डिंग, लेकिन कोई नहीं माना. And then Greta decided to sit alone for the protest even if no one came. Let us fast forward to 2 years later. दुनिया में लाखों लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि ज़्यादातर सरकारें, ज़्यादातर कंपनीज़ ने निग्लिजिबल एक्शंस लिया था क्लाइमेट चेंज को रोकने में. $7 million से ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया 6,000 अलग अलग लोकेशंस पे 185 डिफरेंट कंट्रीज़ में रिपोर्ट किया गया. मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आज तक दुनिया की हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट इवेंट हुआ हो जिसमें इतने सारे अलग अलग कंट्रीज़ में लोगों ने साथ में किया हो. People from almost all the countries have participated in this, and people participated in Pakistan too. And a lot of people, especially the right wing, have criticized this protest. For example, the Trump supporters and the Modi supporters. हालांकि ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट्स उनके बकवास थे, शक्ल का मजाक उड़ाना या पर्सनालिटी को अटैक करना ग्रेटा की. बट सम आर्ग्यूमेंट्स माइट सीम लॉजिकल टू हियर, जैसे कि इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे, स्लोगन्स उठा रहे थे. Would it not have been better if all these people came together to plant trees? It does sound logical, but I do not believe so. मेरा मानना यह है कि दोनों चीज़ें equally important हैं. One of the things here is individual action. कि आपको पर्सनली अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या चेंजिंग लानी चाहिए जिससे कि आप कार्बन एमिशंस कम कर सको और क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद कर सको. द सेकंड थिंग इज़ स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बाकी लोगों को बताना कि ये सब करना चाहिए. इस दूसरी चीज़ में इस क्लाइमेट स्ट्राइक ने बहुत मदद की. Awareness spread amongst the people when they saw so many people protesting against climate change. So the ones who did not believe in this, उनको भी लगने लगा कि नहीं ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पे ध्यान देना चाहिए. And the third thing is creating pressure upon the government and the corporate sector to take some actions. और ये तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है. But all I believe is that all things are equally important. I'd like to give you another example of this. दुनिया की जो the top 100 worst polluting companies हैं वो 71% कार्बन एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं पूरी दुनिया भर में. यानी ये सिर्फ 100 कंपनीज दुनिया भर के क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. इसमें रैंक नंबर 5 पे है एक्सोनिक नाम की कंपनी है. इट इज़ a US based oil and gas company. An investigative report of the Los Angeles Times has found कि इस एक्सोन नाम की कंपनी को आज से 40 या 50 साल पहले पता था कि क्लाइमेट चेंज होने लग रहा है और इससे क्या रिजल्ट निकलने वाला है. फिर भी इस कंपनी ने लोगों से ये चीज़ छुपा कर रखी और इनफैक्ट मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए
प्रोपोगेंडा फैलाने में कि क्लाइमेट चेंज नहीं होने लग रहा है। इस कंपनी ने ज़बरदस्ती ऐसे पॉलिटिशियंस की फंडिंग की जो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं होने लग रहा है। Global warming says, what do we want? Climate action. When do we want? Now. Because there is no heartbeat. There is no heartbeat. There is no heartbeat. A protest against ScoMo and Adani coal. Yeah, because we don't like ScoMo and we want him out of the industry. In 1982, this company conducted an internal study, the result of which are this. इन्होंने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लिया था कि 2020 में क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग दुनिया की क्या हालत होगी। ये 1982 का बना हुआ ग्राफ है दोस्तों। आप इस ग्राफ को फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि 2020 में प्रिडिक्ट कर रहा है 420 ppm कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगा और 0.8 डिग्री से टेम्परेचर राइज होगा। एंड नाउ व्हेन यू लुक एट रियलिटी इन मई 2019, जो लेटेस्ट डेटा है वो बताता है कि दोस्तों की कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 415 ppm पर है। एंड द टेम्परेचर राइज हैज़ ऑल्सो टेकन प्लेस बाय 0.8 डिग्री बाय नाउ। तो उन्हें सब पहले से ही पता था और प्रिडिक्ट भी कर लिया था, फिर भी चीज़ें छुपा कर रखी थी। एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिडिक्शन दिस टेम्परेचर राइज वुड रीच 3.2 डिग्रीज बाय 2080। अब आप सोचेंगे कि ये 1 तो या 3 डिग्री का ही तो फ़र्क है, इससे क्या ज़्यादा थोड़ी फ़र्क पड़ रहा है। 3 डिग्री ज़्यादा गर्मी होगी तो मैं सह लूँगा, लेकिन 3 डिग्री एवरेज टेम्परेचर राइज है दोस्तों। एवरेज टेम्परेचर राइज का मतलब है कि गर्मियों में और भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, सर्दियों में और भी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, बारिश के मौसम में फ्लड्स आएंगे, गर्मियों में और भी ज़्यादा ड्राउट्स आएंगे। And this is already beginning to be perceptible. The temperature has risen by 0.8 degrees and you can see the conditions prevalent in the country and across the world. Record-breaking summer heat waves आ रही हैं। जब बारिश आती है तो हर जगह फ्लड्स हो जाते हैं। ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन तो कहीं ना कहीं फ्लड सिचुएशन सुनने को मिलती है। This is the story of every year before this there was a water crisis due to the droughts. और ये सारी सिचुएशन दोस्तों हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ 0.8 डिग्री राइज की वजह से। तो 3.2 डिग्रीज तक जब पहुंचेगा अगले 50 सालों में, then there would be an exponential increase in all of these things. You have stolen my dreams, my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! In 2016, a lot of countries of the world had signed a Paris Climate Agreement. उस एग्रीमेंट में लिखा था कि सारी कंट्रीज़ कोशिश करेंगी कि टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री या उससे नीचे तक रोका जा सके, 12 below 2 degrees. लेकिन ग्रेटा जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी वो यही है दोस्तों कि अभी तक जितना भी एक्शन सारी सरकारों ने लिया है, कंपनीज ने लिया है, इट डज़ नॉट सीम foreseeable. It does not look like they would be able to limit the climate change to 2 degrees. रियलिटी में दिख रहा है कि आसानी से 3 और 4 डिग्रीज तक पहुंच जाएगा अभी भी। So this is why the protests are so important. I'd tell you to participate in the nearest protest and the protest in your nearby areas next time. क्योंकि आने वाले टाइम में अभी और भी प्रोटेस्ट होंगे। Greta has named this movement Fridays for Future, यानी हर फ्राइडे लोग प्रोटेस्ट करें एनवायरनमेंट को लेकर, स्कूल के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें इस क्लाइमेट चेंज को लेकर। And another thing is due to these protests, the environment and climate change become a political issue. लोग अगली बार वोट देने जाएंगे तो उनको दिमाग में आएगा कि ये मुझे सोच समझ कर भी वोट देना चाहिए। Actions speak louder than words. That's something that all of us know. We need the government and the policymakers to understand and realize that we are living in these conditions that are hazardous to our health and our future. And they have a responsibility to help us. In fact, it's not even at least they're doing this for the environment and at least they're speaking out about single-use plastic. There's no at least when you're a policymaker. It's your moral obligation and duty to help your citizens, and you're accountable to them and responsible for them. Talking about individual actions, I'd like to offer a few suggestions about what you can change in your life अपने carbon emissions को कम से कम रखने के लिए. That is to reduce your carbon footprint as much as possible. सबसे पहली चीज़ obvious है कि पेड़ उगाया करो. The second thing is obvious too. Lesser use of cars and more use of public transport. Packaging को कम से कम यूज़ किया करो.
और एक बहुत आसान तरीका अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम करने का है अपनी डाइट को चेंज करना. You would have noticed that some food items generate carbon emissions on a larger scale. बाकी फूड आइटम्स के कंपैरिजन में. इन जनरल वेजिटेरियन फूड्स जनरेट लेस कार्बन इमिशंस. अगर आप मीट खाते हो तो उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू ईट पल्सेस और बीफ, आप दाल खाएंगे और बीफ खाएंगे तो बीफ खाना दाल के कंपैरिजन में 27 टाइम्स ज़्यादा कार्बन इमिशंस जनरेट करता है. लैम का है 40 टाइम्स यहाँ पर. सो इट्स वेरी सिंपल. रिमूव मीट्स लाइक लैम, बीफ एंड pork from your diet. In general, try and eat as much vegetarian as possible. अगर आप मीट खाना चाहते हैं तो उसे कम से कम खाने की कोशिश करें, जैसे कि एक हफ्ते में एक ही बार खाया जाए. एंड इफ़ यू डू वांट टू ईट मीट देन प्रेफर द अदर मीट्स इन कंपैरिजन टू दीज मीट्स. जैसे कि चिकन खा सकते हैं आप या फ़िश खा सकते हैं, क्योंकि इनके कार्बन इमिशंस इतने ज़्यादा नहीं होते इन कंपैरिजन टू लैम एंड बीफ. क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो एनिमल एग्रीकल्चर यानी इन एनिमल्स की फार्मिंग करना, इन एनिमल्स की मीट जनरेट करना, इन टोटल अराउंड 15% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कार्बन इमिशंस जनरेट करता है. सो 15% क्लाइमेट चेंज कम हो सकती है अगर लोग अपनी डाइट में चेंजिंग लाएँ तो. So friends, there were some suggestions. Try and implement them in your life. If you like this video, then share it, and if you like my work, then you can support me on YouTube and Instagram. Thank you.